Good morning, students. Till now we have completed many problems to find out whether the number is rational number or irrational number. Yes, we have done it. So now it's the ending part of finding rational number or irrational number. And from next online session you will come to know the operations between real numbers. That is a very different point. But till now, which of the problem we have done, what is its conclusion, how can we identify that a number is rational or irrational, that you already know. Which is a rational number which can be terminated, that is a rational number. And which are the irrational numbers? Irrational numbers are those when you are dividing it, it is non-terminating as well as non-repeating type of division. Such problems are known as irrational numbers. So now you will ask, sir, what about the combination of numbers such as 2 root 3? Either it is irrational number or rational number because there is a product. Or you will ask, sir, what is 2 plus square root of 3? Because only square root of 3 you can say it is irrational. But what about algebraic function? When you are adding numbers, when you are subtracting or dividing, multiplying, that is algebra. That is irrational or rational, we have to conclude. So it is last important thing you have to remember. So that is how you can do such more problems regarding rational numbers and irrational numbers. Okay, so which are those rules which we can say for a number, is it a rational or irrational? So the sum or difference of a rational number and an irrational number is irrational. Suppose one number is rational, another irrational. If you are adding those numbers or if you are subtracting those numbers, the final result will be irrational. You know, rational numbers can be denoted by capital Q and irrational number can be denoted by capital I. So if you are adding Q plus I or Q minus I, rational number plus irrational number or rational number minus irrational number, then the final result will be irrational. Again listen to me very carefully. अगर आप दो एक रैशनल नंबर और एक इररेशनल नंबर को ऐड करते हो या सब्सट्रैक्ट करते हो, इन दैट केस फाइनल रिजल्ट विल बी डेफिनेटली इररेशनल. क्योंकि इररेशनल जहां पे पिक्चर में आया तो वो पूरे रैशनल को भी इररेशनल बना देगा. यस और नो? सो इफ यू आर एडिंग, सपोज क्यू रैशनल नंबर है 3/2, ठीक है, 3/2 इज अ रैशनल नंबर. क्योंकि 3/2 किया तो आंसर आएगा 1.5, तो वो टर्मिनेटिंग है. इफ यू आर एडिंग 3/2 प्लस पाई, तो पाई क्या है? इट इज अ इररेशनल नंबर. तो फाइनल रिजल्ट अगर आप निकालोगे तो दैट विल बी आल्सो इररेशनल नंबर. ओके. So first point I think is very clear कि if you are adding or subtracting between rational number and irrational number, then the final result will be irrational. Now second, the product or quotient. Here for quotient you can take division. The product or division of a non-zero rational number, a rational number which is not a zero. Why I am saying that? Because zero is also rational number. तो हमको जीरो को छोड़ के कोई भी नंबर लेना है. वी डू नॉट हैव टू टेक जीरो. दैट इज अ प्रोडक्ट और डिवीजन ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विथ एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल. अगेन अगर प्लस और माइनस किया तो भी इररेशनल आ रहा है, और अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन यू आर डूइंग, स्टिल यू आर गेटिंग इररेशनल नंबर. सो कैन आई से कि जब भी एक नंबर इररेशनल हो, व्हेनेवर वन नंबर इज इररेशनल, उसको रैशनल नंबर के साथ प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, ये चारों अलजेब्रा लगाए, फिर भी द फाइनल रिजल्ट विल बी इररेशनल. समझ में आया? इफ इररेशनल नंबर इज देयर फॉर अ algebraic expression such as addition, subtraction, multiplication and division, then the final result will be irrational number itself. जहां पे irrational आ गया वो final result irrational ही बनाएगा. Yes or no? Okay.
one more thing is there, but here I have not written. रैशनल और रैशनल नंबर के बीच में कोई भी आप चीज करो, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, तो उसका फाइनल रिजल्ट रैशनल ही आएगा. What I am saying, if you are doing algebraic expression between both the rational numbers, तो वो दोनों रैशनल नंबर्स का फाइनल रिजल्ट भी रैशनल नंबर पे आएगा. बट इररेशनल नंबर में करें तो इज इट द सेम? लेट अस सी. थर्ड पॉइंट, if we add, subtract, multiply और divide two irrational numbers, दोनों नंबर अगर irrational है और उन दोनों के बीच में प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करें तो फाइनल रिजल्ट बता नहीं सकते. It can be rational also और it can be irrational also. You have to take it in mind. अगर दो irrational नंबर को मल्टीप्लाई करो, एडिशन करो, सब्सट्रैक्शन या डिवीजन करो, तो उसका फाइनल रिजल्ट रैशनल भी हो सकता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दो रैशनल नंबर के बीच में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करो तो उसका रैशनल ही होगा. बट फॉर टू इररेशनल नंबर्स, 2i, ये दोनों i मिला के या तो q भी हो सकते हैं या i भी हो सकते हैं. इज इट क्लियर टू यू ऑल? सो आई थिंक ये तीनों रूल्स बहुत ही इजी और इंटरेस्टिंग है. सो फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दे विल आस्क सच थिंग इन 1 मार्क्स क्वेश्चन. फॉर एग्जांपल, स्टेट वेदर 2 square root of 3, 2 into square root of 3, is it rational or irrational? तो आपको पता है कि square root of 3 is irrational और मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन विद अ रैशनल, that is irrational. So directly you can say कि sir this number is irrational. You don't have to follow the multiplication. ऐसा आप नहीं करोगे कि root 3 का वैल्यू निकाला, then you are multiplying with 2, फिर आप देखोगे कि is it terminating or non terminating, then you have to answer. तो 1 मार्क्स के लिए इतना सारा प्रोसीजर is not required. So for that you can use these rules. Again, fast revision. Operation between rational number and irrational number is positive or negative, then the final result will be irrational number. Product and division between rational number and irrational number will be again irrational number. One more point was there, I haven't written them here. वो क्या है कि any algebraic expression between rational number and rational number, between q and q, that will be always q. वो रैशनल ही होगा. एंड द फाइनल, इफ द ऑपरेशन बिटवीन द algebraic expression between irrational number and irrational number is plus, minus, multiplication, division, can be either rational number or irrational number. हम बता नहीं सकते, वो रैशनल भी हो जाएगा और irrational भी हो सकता है. ओके, सो नाउ वी आर मूविंग फॉर नेक्स्ट सच प्रॉब्लम्स. Let us see another example, which is example 12. It is already been given in your textbook also. So they are asking, check whether 7 square root of 5, 7 upon square root of 5, 2 plus 21 pi minus 2 is either rational number or irrational number. So those three rules which we have learned just now, you have to apply over here. So the first number is 7 root 5. There is nothing, that means it is a product, it is a multiplication. So 7 into root 5. From previous problem we know that square root of any prime number is irrational. Square root of any prime number. So here square root of 5, 5 is a prime number and square root of 5 will be irrational number. So 7 is a rational number? Yes. So we can write it as a cube? Yes. Root 5 is a irrational number? Yes, root 5 is a irrational number. You know that from rule number 2, if there is a product or division, product means multiplication. If there is a multiplication or division between rational number and irrational number, then final result will be irrational number. So 7 under root 5 is irrational. Let us take quickly second problem, 7 upon root 5. 7 upon square root of 5. So we already know that 7 is a rational number. Root 5 is an irrational number.
and the operation between 7 and root 5 is division. So operation between rational number and irrational number is division. Then the final product will be irrational. We know that. So this number is also irrational. Third problem. Square root of 2 plus 21. Square root of 2 plus 21. Again, square root of 2 is irrational. We know that. Square root of any prime number is irrational. Plus 21 is rational number, we know. So operation between irrational number and rational number is addition. First rule. So the final number will be irrational itself. So this is also irrational. Final. Pi minus 2. 4. Pi minus 2. We know that pi is a irrational number. 2 is a rational number. The operation between these two is subtraction. First rule again. So the final answer will be irrational itself. So I think for any number you can give answer regarding either it is rational number or irrational number. Easy? So now we are moving for a next topic. Now students, we will move on to the addition, subtraction, or I can say algebraic expression between two real numbers. That is another एक step आगे हम जा रहे हैं. Till now what you have done? Addition between rational irrational. Find whether it is irrational or not. कैसे find करते थे कि terminate हो रहा है या नहीं हो रहा. Terminate नहीं हो रहा है तो फिर से दो पार्ट है कि repeat हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर repeat हो रहा है तो वो irrational नहीं है. Non repeat हो रहा है तो वो irrational है. So we have done so many of problems regarding rational numbers and irrational numbers. So now we are moving one step ahead, that is addition between two real numbers. ये irrational number से easy concept है, तो आपकी सांस थोड़ी नॉर्मल चलेगी. जो ऊपर चली गई थी ना स्टार्टिंग में, अभी वो धीरे धीरे नीचे आएगी. एंड देन फाइनल वी विल डू द इजीएस्ट प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इजी, क्योंकि खाने के टाइम मीठा सबसे लास्ट में खाना चाहिए ताकि मुंह मीठा रहे. यस और नो? सो व्हाट वी हैव डन, वी आर गोइंग फॉर अ हैवियर टू इजियर. हम जब भी जा रहे थे शुरुआत में बहुत हैवी टफ प्रॉब्लम्स आपको लग रहे होंगे. आई थिंक वैसे तो टफ नहीं है, फिर भी नाउ वी आर डिसेंडिंग टूवर्ड्स इजीएस्ट प्रॉब्लम. So addition between operations between real numbers is little bit easy. So let us take example 13. Add 2 root 2 plus 5 root 3, that is 1, and square root of 2 minus 3 root 3. We have to add these two real numbers. Real कैसे हो जा रहा है? क्योंकि here you can see, here also product is there, here is also product is there, and these two product is been joined by plus sign. तो यहाँ पे complications, numbers बढ़ रहे हैं. So that is how it comes under real numbers. So let us say we do have therefore sign you have to put at the first. So 2 square root of 2 plus 5 square root of 3. What we have to do? We have to add. So one addition sign is there. That is square root of 2 minus 3 root 3 minus 3 root 3. So it is a question. Yes? कोई गलती नहीं है? No. Now as we know कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है. As we know कि ब्रैकेट के बाहर प्लस साइन है. प्लस अच्छा बच्चा है. अच्छे बच्चे घर में कोई फर्क नहीं लाते. यस और नो? जो अच्छे बच्चे होते हैं घर में शांति से बैठे रहते हैं. सो सिंस ये घर है और घर के बाहर प्लस है, सो व्हेन वी ओपन अवर होम, जब हम घर खोलेंगे, हम अपने ब्रैकेट खोलेंगे, तो दिस प्लस साइन विल नॉट चेंज एनीथिंग. कुछ भी चेंज नहीं करेगा. पर दूसरा वाला बच्चा है सब्ट्रैक्शन, जो अगले प्रॉब्लम में हम देखेंगे. तो अगर सब्ट्रैक्शन है, वो तूफानी बच्चा है. अगर तूफानी बच्चा घर के अंदर गया तो घर को तहस नहस कर देगा. दैट मीन्स इफ प्लस were there,
वो प्लस को बना देगा माइनस, और माइनस में उधर तो माइनस को बना देगा प्लस। तो दो बच्चे हैं, यहाँ पे अच्छा वाला बच्चा है तो हमारा प्रॉब्लम इजीली हो जाएगा। सो लेट अस से व्हाट वी विल डू फर्स्ट, वी आर रिमूविंग दिस ब्रैकेट फर्स्ट। सो देयरफॉर, अगेन ये देयरफॉर के साइन वी हैव टू पुट ऑन एवरेज टाइम। तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3। यहाँ पे देखिए ये प्लस था तो नन ऑफ द साइन इज बीन चेंज्ड। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक लाइक टर्म्स वन साइड एंड अनलाइक टर्म्स अदर साइड। जो एक जैसे लग रहे हैं उनको एक साथ कर दो, और जो एक जैसे नहीं लग रहे उनको दूसरे साइड कर दो। So which are the like terms? Look at here, square root of 2 is here and square root of 2 is here. Yes or no? Yes. Abhi square root of 3 is here and square root of 3 is here. So what we will do, we will put this together, this square root and this square root together, and this square root of 3 and this square root of 3 together. So now इसको हम ले लेते हैं यहाँ पे इसके साथ। सो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसकी साइन क्या है प्लस, साइन इज ऑलवेज लेफ्टवर्ड तो उसको प्लस ले लो, स्क्वायर रूट ऑफ 2। अभी इसको यहाँ पे ले लिया तो इट विल ऑटोमेटिकली गो बैकवर्ड्स, एक दूसरे की जगह चेंज कर रहे हैं। इसकी साइन क्या है प्लस 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट ऑफ। Yes or no? Yes. अभी देखिए, for these two things, what is common? तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 2 है वो कॉमन है। What is common over here? तो बोलोगे सर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है वो कॉमन है। So what I can do? मैं पूरे ये दोनों में से स्क्वायर रूट ऑफ 2 I am taking out common. So let us take स्क्वायर रूट ऑफ 2 as common. तो यहाँ पे what is the remaining here? It is 2 plus as it is, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचेगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाल लिया तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। If nothing left तो वो क्या है ऑटोमेटिकली it is a 1। Yes or no? Yes. क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 we can write it as square root of 2 into 1, so there is no change. Similarly, यहाँ पे we can take out common as square root of 3. If we are taking square root of 3 as common, what is remained here? That is 5 minus what is remained here? That is 3. Yes or no? Yes. Now 2 plus 1 that is 3. So can we write as square root of 2 into 3 plus square root of 3, 5 minus 3 that is 2. Yes, but there is a rule कि स्क्वायर रूट ना ऑलवेज इसके पीछे ही आएगा। सबसे पहले रैशनल नंबर को ही अरेंज करना है, उसके बाद इररेशनल को करना है। तो कंसीडर हियर ये रैशनल है, ये इररेशनल है, तो इसको पहले होना चाहिए, इसको बाद में होना चाहिए, ऑर्डर ऐसा होना चाहिए। सो वी आर रीअरेंजिंग, हम क्या कर रहे हैं रीअरेंज कर रहे हैं। देखो मैं therefore बोल रहा हूं, okay, now therefore, so what we will write, 3 square root of 2 plus 2 square root of 3, and this is your answer. So I think ये आपको थोड़ा सा इजी लगा होगा compared to irrational numbers. Now we are moving for a next problem. So now example 14, it says that multiply 6 root 5 by 2 root 5. So we will put a value again. What we have to do, we have to multiply, that is 6 square root of 5 multiplied with 2 square root of 5. So again rational number you can take out. So can I write it as 6 multiplied by 2? So that is 6 into 2 into square root of 5 into square root of 5. What I have done? I have taken
rational numbers together and irrational numbers together. Yes or no? But अभी आपने जो third point सीखा था ना, that you have to revise. What is 6 into 2? That you can say 6 2s are 12 into square root of 5 into square root of 5. Square root of 5 into square root of 5. Can we write it as a square root of 5 into 5? Square root हमने common ले लिया. So can we write square root of 5 into square root of 5 is equal to square root of 5 into 5? Yes, we can write it. So can we write 12 into square root of 5 into 5 is 25? Yes or no? Yes. So what is square root of 25? That is 5. So 12 into 5, can we write it like that? No. And what is 12 5s are? That is 60. And that is your answer. Now the third point, कि irrational number और irrational number का multiplication करते हैं. If we are multiplying irrational number with irrational number, so result can be rational also or irrational number. तो यहाँ पे केस कैसा है? दोनों नंबर irrational है, पर उन दोनों का फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है? रैशनल नंबर. मजा है? हाँ, that is very interesting. तो since these numbers are irrational, यहाँ पे देखो ये नंबर भी irrational है, ये नंबर भी irrational है, but final result we are getting as a rational number. Yes or no? Because 60 can be written as a 60 divided by 1. Okay? So now we are moving for a next problem. Now example 15, which says that divide 8 root 15. Divide 8 square root of 15 whole divided by 2 square root of 3. So again, what I am doing, I am putting rational numbers one side and irrational numbers other side. So it will be easy for us to solve a problem. So as we know, we can write it as a 8 upon 2 into square root of. Can I write 15 as a 5 into 3? Yes, it is still in the square root of bracket, so there is no issue. Can I write square root of 3 as square root of 3 itself? Yes or no? So next step, 8 upon 2 into. Can I write square root of 5 into 3 as square root of 5 into square root of 3? मैंने उसको सिर्फ अलग कर दिया है. I am giving them both the square root of bracket. Yes or no? Yes. And can I write square root of 3 as it is? Yes. So square root of 3 and square root of 3 is common in numerator also and denominator also. So can we cut this? Yes. 2 4s are 8. So what is the final answer? That is 4 into square root of 5. Or we can write it as a 4. We can write it as a 4 square root of, and this is your answer. Easy? Yes, it is easy. So now there are some more problems that we will take in your next online session. Okay? Till then, thank you so much.